Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and stay safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Parveen, and I welcome you all to the social study class. My dear students, as you know that we have already started unit number 3. The name of our unit is State and Government. I have already delivered its introductory lecture. Today we are going to start lecture number 1. So in this lecture, students will be able to define state and government, and they will also be able to differentiate between state and government. So my dear students, अब हम जो है गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। नेम से ही आपको इस चैप्टर के पता चल चुका है कि दिस इज अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट, लेकिन आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे स्टेट और गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में जाने के लिए डिफाइन है, और फिर इसके दरमियान बच्चे डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे दैट व्हाट इज द स्टेट एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद एन एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में मैं आपको क्या बताऊंगी दैट स्टेट क्या होती है। एक स्टेट की एसिटीज होती है जहाँ पॉपुलेशन होती है, उनकी अपनी टेरिटरी होती है। एक स्टेट क्या होती है कि एक स्टेट में पॉपुलेशन होती है, उसके अलावा एक स्टेट की अपनी टेरिटरी होती है, इसके अलावा स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, यानी कि उनकी एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और इसके अलावा उपभोक्ता होते हैं, दे आर सॉवरेन इन उनकी सॉवरेनिटी होती है। तो जैसे कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन भी है, हमारी अपनी टेरिटरी भी है, एज यू कैन सी बाय द मैप ऑफ पाकिस्तान देयर इज अ बाउंड्री अराउंड इट। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी है, और वी आर सॉवरेन कंट्री, यानी कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम अपने मसले में। और अब गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट के 3 जो होते हैं, यानी कि 3 पार्ट होते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। Okay, my dear students, now let's quickly refresh your knowledge. So quickly tell me, to run a school in a proper way, there is an administrator in the school. Do you think a school can be run efficiently in the absence of administration? So my dear students, previous classes में आप लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, और तब मैंने आपको काफी प्रीवियस लेक्चर में हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप अपने स्कूल में हैं और वहाँ कोई प्रॉपर रूल्स एंड लॉज नहीं है, तो क्या आपका स्कूल प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है? कोर्स नॉट। सो अब ये पूछ कर बताएं कि ये रूल्स और लॉज कौन बनाता है? टीचर्स बनाते हैं? नो, टीचर्स डोंट मेक द रूल्स एंड लॉज ऑफ द स्कूल। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल मेक द रूल्स एंड लॉज। और आपके स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं, एंड ही मेक्स ऑल द रूल्स एंड लॉज ऑफ द स्कूल। सो इसी तरीके से आपका स्कूल जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। अब आप मुझे ये सोच के बताएं कि हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। नाउ हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान? प्रेसिडेंट। वेरी गुड। Okay, my dear students, keep these things in your mind. Okay. Now let's quickly move forward to the Islamic perspective. So you are the best ummah, nation, community raised up for people. You enjoy good and forbid evil, and you believe in Allah. So my dear students, अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हमारी जो उम्मत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये सबसे बेहतरीन उम्मत है। हम जो है अच्छे कामों की तरफ देते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, और इसके अलावा हम अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। Okay, my dear students, now let's quickly start the reading. So I request you all to please open your social study books and open page number 54. I hope everybody has opened the page. So let's start the reading. You will put your fingers where I will. State and government. State. The state is defined as a group of people in a territory under a system of government having sovereignty. So जैसे कि हमने एक्टिविटी में डिफाइन किया था कि एक स्टेट जो है वो ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ लोग होते हैं, उनकी अपनी एक टेरिटरी होती है, और उस टेरिटरी में एक गवर्नमेंट नाफिज की जाती है, और वो जो मुल्क है या वो स्टेट है वो एक सॉवरेन होता है, एक मुख्तार होता है, उसको कोई और डिक्टेट नहीं करता या वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। So they are sovereign, यानी कि वो लोग। Okay, now government, let's define the government. Government is defined as a group of people who govern or run a country or state. My dear students, अब गवर्नमेंट क्या होती है और इसको हम स्टेट से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? स्टेट जो है बेसिकली वो एक लोगों की टेरिटरी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक मुल्क को या स्टेट को चलाते हैं,
वो उसको रन करते हैं, जैसे आपकी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन आपके स्कूल को चलाती है, जस्ट लाइक दैट आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है आपके मुल्क की, जो कि आपके मुल्क को बेहतर तरीके से चलाती है, वहां पर लॉज इन्फोर्स करती है और तमाम जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतर तरीके से चलाती है. Okay, my dear students, now let's continue forward towards the reading again. Okay, now let's differentiate between state and government. So it is a geographical entity having its constitution. तो एक स्टेट क्या होती है? स्टेट एक जियोग्राफिकल एंटिटी होती है, यानी कि एक खिता होता है जहां पर उनके अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. Whereas government is the political administration of a country or state. जो गवर्नमेंट होती है एक कंट्री की पॉलिटिकल स्टेट होती है, यानी कि वहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको चलाते हैं. Now, a state cannot be run without the government because the government makes laws, implements laws and ensures them. So, एक state जो है वो एक government के बगैर नहीं चल सकती. So, government is very important for the state. और government जो है वहाँ laws बनाती है, उसको implement करती है और ये show करती है कि वो laws जो है सब follow करती है. Now, government. The government cannot be run without the state. और जो government है वो स्टेट के बगैर नहीं बन सकती, यानी कि एक स्टेट होगी तो उस पर गवर्नमेंट बनेगी और एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए स्टेट बहुत जरूरी है. तो दोनों जो है आपस में इनका गहरा रिश्ता जो है आप समझ सकते हैं. ठीक है. नाउ द स्टेट हैज 4 एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी. तो जस्ट दैट वी डिड इन द एक्टिविटी, एक गवर्नमेंट के 4 एलिमेंट हैं, यानी कि वहां की पॉपुलेशन, उनकी टेरिटरी, उनकी जगह, फिर उनकी गवर्नमेंट और उनकी खुद मुख्तारी यानी कि सॉवरेनिटी. देन द गवर्नमेंट इज ओनली एन एलिमेंट ऑफ अ स्टेट. और गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ एक एलिमेंट है स्टेट का, यानी कि तो एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक मुल्क को या स्टेट को चलाता है. द स्टेट इज अनचेंजेबल बाय हूएवर गवर्न्स इट. ठीक है. एक स्टेट जो है वो अनचेंजेबल होती है, चाहे उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके गवर्न करे, रन करे, स्टेट जो है वो अनचेंजेबल नहीं, यानी कि उसकी आप टेरिटरी को चेंज नहीं कर सकते, उसकी सॉवरेनिटी को आप चेंज नहीं कर सकते. ओके. देन द गवर्नमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. सो जो एक स्टेट में या कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट उनके लिए बनाई जाती है, उनकी मर्जी से. द होल पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जितने भी लोग एक स्टेट में रहते हैं वो उस स्टेट का हिस्सा बन जाते हैं. The legislature, executive and judiciary are part of government. यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किन 3 चीजों से मिलकर बनती है? लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी से. So my dear students, this was the difference between state and government. मैंने आपको साइड बाय साइड तमाम पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं. I hope now you understand it. That government is a system that takes over the country or the state और उसको रन करती है. Whereas जो state है, that is the territory, वो एक खिता होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड sovereignty. Okay, my dear students, now let's move forward towards the practice. So practice में आपने क्या करना है? This is Argentina. इसकी पॉपुलेशन कितनी है? Then its territory, the kilometers में लिखी हुई है. Then it is a sovereign state. And इसके अंदर कौन सा सिस्टम है? इसके अंदर फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक सिस्टम है वो नाफिज होगा. So my dear students, I hope आपने आज के लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा. Let's quickly wrap it now. A group of people living in a geographical area under a system of government is called a state, whereas a government is formed based on a group of elected people via general elections to run that state. Okay, my dear students, now the time for worksheet. So you can download the worksheet from the description box below and you can get it in your home. So home activity number 1, search out what kind of government system is practiced in Pakistan. Who is the current head of the government of and head of the state of Pakistan? So my dear students, Pakistan में कौन सा government system नाफिज हुआ है? That is executive system. और who is the current head of the government of the Pakistan? And who is the head of the state of Pakistan?
So head of the state is R. and the head of the government is Shahbaz, because he's the prime minister now. So my dear students, your next homework is research and analysis. How government and state are interlinked. कैसे गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो इंटरलिंक है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है. जस्टिफाई योर आंसर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि कैसे जो पाकिस्तान है उसके अंदर कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो लागू हुआ है. इसके अलावा आपने गवर्नमेंट और स्टेट कैसे इंटरलिंक है आपने ये भी बताना है कि जो स्टेट है वो गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकती और स्टेट के बगैर जो है वो गवर्नमेंट भी नहीं बन सकती. ठीक है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. यू विल डू एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. सो द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट क्या है, जल्दी से रिकॉल करें. पॉपुलेशन, टेरिटरी, देन गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी. वेरी गुड. And from exercise C, question number 1, how state and government are different, but still they are essential for each other. Explain. So my dear students, आपने ऑलरेडी जो है डिफरेंशिएशन जो है दोनों की दरमियान पढ़ी है और दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे नहीं चल सकती, आप इसको भी एक लाइन के नीचे एक्सप्लेन करना है. पहले डिफरेंशिएशन लिखे, जस्ट गिवन इन द बुक, आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं. और फिर कैसे दोनों इंटरलिंक है, कैसे एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकती, आपने ये भी एक्सप्लेन करना है. Okay my dear students, so in the next class we will study the Constitution of Pakistan and its basic principles. तो अगले लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है यानी कि जो लॉज है पाकिस्तान के हम पढ़ेंगे. सो अंटिल देन कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.